अरे ओ लस्पीरान के यतीम कई रूप तेरे जिंदगी हर रूप में कई रंग तुझे फूल कैसे मिले बता तेरे हाथ में है संग जो सुनी गई ना हुई बयान कही सी दास्तां उसे काफिले से क्या वास्ता वो है खुद में कारवां शो ना देखिया तुसी मैं तो कुछ नहीं कह सकता It's alright. Assalamu alaikum, this is Amna, you're watching Something Hot and this is Hot Talk. I have with me today the most popular, most credible and most critically acclaimed music artist in Pakistan today. He's given us 17 years of incredible music, music that is unforgettable. And he's also given us his TV debut with a drama called Sangema. I have with me Atif Aslam. Atif, welcome to Something Hot and thank you so much for taking out this time. Thank you for having me. बहुत busy time आपका चल रहा है and you've just been touring. You toured USA and then you were in Australia, New Zealand. Yeah. It's been a really busy time. उससे पहले संगेमा की shoot, Coke Studio, Velo Sound Station, your own singles. You've been doing so much work in the last 1 year. Is this a post-COVID like work hype? Yeah, is this generally your life? This was generally my life, and I just wanted to bring it to the people. And I actually wanted to focus more on my originals as well. So, which is why I think I recorded some of the new stuff. And Yeah. on the side, I wanted to experiment at the same time. Or gigs to chali rahi hoti. So, the reason why I couldn't do anything for 17 years on TV was because I was so packed. You know, I did not have enough time for even my family. Yeah. So I think post-COVID जो था, हाँ. it was much needed for me because I'd rested pretty well. Pretty well. Yeah. 2 साल है ना? 2 Exactly. साल का एक lull था period. Exactly. उसमें भी लेकिन शुक्र था अल्हम्दुलिल्लाह I got a chance कि अल्लाह ताला के नाम करने को मिले. जी बिल्कुल. वो किए. बिल्कुल. और अजान थी वो की. So you know उसमें भी कुछ ना कुछ हो रहा था. हाँ हाँ absolutely. मुझे लगता है आतिफ ये बड़ी एक फेज ऑफ रीइन्वेंशन है आपके लिए. आप अपने आप को भी रीइन्वेंट कर रहे हैं. आपका म्यूजिक थोड़ा सा रीइन्वेंट हो रहा है, रिक्रिएशन हो रही है. एक्टिंग क्या इसी का हिस्सा थी? एक्टिंग एक्चुअली आप सच पूछो तो मैंने ये सोचा तो नहीं था कि मैंने कुछ करना है, बट लेकिन ये जरूर था कि हाँ आई वांटेड टू चैलेंज माई सेल्फ. राइट. बिकॉज एक तो वो कोविड का पीरियड था कि जिसके अंदर कुछ नहीं मैं कर रहा था, एंड आई वाज थिंकिंग कि क्या करना चाहिए जो मेरे काम से थोड़ा सा अलग हो. थोड़ा सा मोनोटोनस सा हो रहा था, मुझे खुद से लग रहा था एज एन आर्टिस्ट. तो मुझे लगा कि कुछ और जरूर करना चाहिए. सो देन यू नो संगेमा केम इन, और मोमिना ने जब मुझे ऑफर किया स्क्रिप्ट, सो इट वाज ब्यूटीफुली रिटन बाय मुस्तफा अफरीदी. और सैफी और मुस्तफा जो थे दे फ्लू डाउन फ्रॉम कराची, घर आए और आके उन्होंने बात की मेरे से, एंड ऑफ कोर्स दे आर लाइक स्वीट हार्ट्स. तो उन्होंने जिस तरीके से बात की और जिस तरीके से मुझे बताया, it was convincing. Yeah. It was very convincing, and it felt as if it's something very powerful that I'm going to do. और जब मैं उसको पढ़ता था तो मुझे लग रहा था कि कुछ ऐसा ही मेरी तरह का पागल इंसान है हिलमन. कुछ मेरी तरह का ही है ये. तो कुछ सिमिलैरिटी है उसके मोनोलॉग्स और उसकी शायरी, और यू नो शायरी में बात करता है, उल्टी बातें करता है और बातें सुनाता है, लगा भी देता है. So he was like somewhere like me. Somebody you could relate to. Yes, exactly. हाँ. So I'm not very revengeful kind of a person, but yes, dark and messy. Somebody, of course, dark and messy maybe. Okay. But so वो हुआ तो I think that's the reason why I said yes to it, and I had a wonderful time shooting it. All the more respect for the actors. Yeah. Because मुझे ऐसा लगता था पहले, because मैं सिर्फ अपने शेल में रहता था ना कि हाँ यार गाना है, स्टेज पे जाना है, it's like quite a performance. It's not a joke, but no. Facing the camera with dialogues and your body has to be in sync with it is like an entire job. It's a big deal. You had a little brush with acting in Bol.
Correct. Correct. Magar, that was just. I wouldn't call that brush. It wasn't, Because, of wasn't? course, I would go to the director and I would ask him, Sir, ye theek tha? He was like, Haan, theek tha. Huh. So I did not have enough role to play with. Right. And I was just excited to be a part of the film, maybe. And I was used as a production value to the film. And people came in, oh, Atif Aslam ki film aa rahi, film aa rahi. You know, they just came in for that. Yeah. And, but thankfully enough, it was a success as well. Absolutely. Although I had a small role in it. But yes, I thought about it later on in my life. I'll definitely challenge myself. But it's a different giant. It's a different, it's a different giant altogether. Really? Yeah, because sorry. yeah, I mean, it's a different giant because you know in videos you're just miming and you're just you know you have fixed moves what you can do. There's so much you can do, right? Yeah. But in a drama, in a script, as I said, your body has to be in sync with the character and with those dialogues. I had to deliver the dialogues. Don't you think that stage performance जब किसी concert पे या gig पे performance होती है, isn't that also an act? मैं कभी-कभी सोचती हूँ कि जो musician जाता है stage पे, are you taking yourself to the stage or are you taking Atif Aslam, the musician, the star to the stage? I mean, वो भी एक act नहीं है? Well, on stage, yes, it's a different person altogether. It for is. me. It is a different person. But yes, you see a bit of reflection of my personal self at the same time. When I'm singing Tajdare Haram, you know, it is kind of a reflection. And I don't care who's standing right in front of me or not. I'm just in my own zone for that particular Qawwali. Bilkul. Yes, it is an act as well because I have to entertain people at the same time. And I make sure that, you know, they have their paisa wasuli. Right? So that is my job as well. And at the same time, thankfully, it's my art. Absolutely. And people love it. लेकिन उसमें यही है कि stage, I prefer stage more than the studio. Right. Is because I'm a beast on stage. And I can be myself. Yeah. Right? And I, alhamdulillah, by now, after 17 years, I know how things work on stage. थोड़ा सा कोई glitch आता है तो आप उसको किस तरह से cover करते हैं. A lot of people don't even know that how many times I burped on stage. Right? Right, of course. Normal things, right? Everybody does that. But, you know, if you're good at hiding that stuff, you know, you've learned a little bit of the art to somehow showcase your art. लेकिन जो acting थी, of course, उसमें आप कुछ नहीं छुपा सकते. उसमें you have to be that person. You have to be, for example, Sangyama, you have to be Hilmand all the time. You cannot be Atif Aslam. So to unlearn Atif Aslam, it was a big challenge for me. Because I was used to the fact that, you know, we have 7-star hotels everywhere we go, luxury and all of that. We had to shoot in a gaon. Right. And that too in a guest house. And that too in the winter times. Right. Where there were no like heaters and stuff. वो वाले gas वाले heaters थे जो कि कमरे में रख के सोना थे कोई पता नहीं कब फट जाए. Right? So that kind of stuff. So khatarnak. And the first night when I was in that guest house, उस बिस्तर पे लेटा तो मैं छत की तरफ देख रहा हूँ मैं कह रही what have I signed for? मैंने क्या कर दिया? ये मैंने क्या कर दिया? But no, after a couple of hours, I couldn't sleep the first night. सही तरह से. After a few hours, I was like, no, this is how you started. Remember? This is how you started singing. इसी तरह की जगह होती थी. इसी तरह के काम होते थे. इसी तरह के venues होते थे. इसी तरह लोग आके कभी कभार मतलब तब तो बुली भी करते थे. Right? कि आपको तो गाना ही नहीं आता. आपको तो कुछ करना ही नहीं आता. आप क्या कर रहे हैं? ये किस तरह का गाना है? There is a theory to it. There's a hard and fast rule how to you sort of present yourself and sing with. एक singing का तरीका होता है. आप तो उस तरह से गा नहीं रहे. आप राग से बाहर गा रहे हैं. ये कैसे कर रहे हैं आप? और अब जो आप गाते हैं वो तरीका बन जाता है. So मतलब ये वो वाली तो I was drawing a comparison. Right. So that really helped me. Those 40 days really helped me unlearn Atif Aslam and become Hilmand. कितनी देर का शूट था? It was about 40 days, 35-40 days. And all in the northern areas? All in the area of Mansehra. It's called Bhogad Mang. अच्छा. And Las Piran. Does it exist? It does. It does. अच्छा मेरे ख्याल था fiction. No, everything's real. Really? I thought it was a fictional area. Not at all. Right. Yeah. So 40 days there. Yeah. Atif Aslam left behind somewhere in Lahore, in the luxuries of Lahore. That's correct. I mean, था उसके 3 spells थे, but yes, of course, 12 दिन के 15 दिन के spells थे.
लेकिन it was all great. कभी कभार लाइट चली जाती थी, I had to read the script. था generator, but then again, you know, limited resources. हाँ. And I remember that I had no training and I had like no experience of acting. And suddenly, all of a sudden, you're standing in front of Naman Ijaz, and you're like, okay, so. And no less than Numan Ijaz. I mean, yeah. I mean, yeah, he's brilliant. He's great. He's a legend. But I remember when I got the script, I had to rehearse that script with my own self. A, B. मेरा जो घर का कुक था, उसको मैं स्क्रिप्ट पकड़ा देता, उसको मैं नुमान इजाज बना देता था. I mean, no offense नुमान भाई. But किसी ने तो पढ़नी थी ना लाइंस. हाँ, मतलब लाइंस की बात कर रहा हूँ. तो नुमान इजाज साहब जो थे वो, मतलब वो सामने मेरे बैठा हुआ और मैं वो ऑब्वियसली नुमान साहब की तरह वो रिएक्ट नहीं कर रहा था, वो सिर्फ डायलॉग्स पढ़ रहा था. तो मेरे ज़हन में वही था कि नुमान इजाज साहब भी जो है ऐसे ही बात करेंगे, बल्कि लेकिन नहीं, मैं भूल गया था कि वो कौन है. You know, so when he started delivering dialogues, and I was like, wow, that's brilliant. That's how you do it. That's how you do it. Yeah. So he was very helpful at the same time as well. So बड़ा मजा आया. हाँ, लेकिन rewind a little bit. Yeah. हम off camera बात कर रहे थे. बड़ी opposition आपको आई family से. Nobody encouraged you to do this, to do drama. Yeah, television. Sara at the very first place. Really? Sara said, "No, are you mad? Are you crazy? I mean, you're at the peak of your career. Why would you want to do such a silly move? Big risk, huh?" Yeah. So I was like, "No, man. I had to like challenge myself. I mean, are you trying to tell me that I cannot do this?" She's like, "No. If you're good at one thing, why are you trying to do another thing?" I mean, but then I was like, "Okay, I don't care right now. I have to prove myself that I can do something else as well." So ये मेरे अपने creativity के लिए जो है ना वो बहुत ज़रूरी है. So that's when I signed up, and when she saw it, and she's like, I never thought that you could do this. मेरे ज़हन में आया नहीं है. And she was the first one who was very happy. Happy, of course. That, you know, with the success. जब लोगों ने उसको फ़ोन किया और बताया कि are you watching that drama? तुम्हारे मियाँ ने क्या acting की है? ये वो and all of that. She was very extremely happy and proud of me. Atif, what went into the making of Hilmant? आपने कितनी groundwork की, homework किया, नहीं किया? Did you just jump into it? Because professionally, you haven't. Nothing actually. Yeah. मुझे पहले कहा गया कि आप देखें Hamlet देखें. हाँ. फिर उन्होंने कहा ना देखें, confused हो जाएंगे. ठीक है. फिर मुझे ये समझ आई कि हाँ उसके जो dialogues आ रहे हो लस्पीरान के यतीम हिलमंत. So I had to build that voice and aura and the character myself. I did not know on the very first day कि ये बंदा होगा क्या. I was doing my thing. And I was asking Safi कि is it right? क्या यही character? He's like बिल्कुल सही कर रहे हो, यही करना है. यही करना है. बिल्कुल सही कर रहे हो, यही करना है. So he was encouraging throughout. And because I'm not a pro, so जहाँ मैं deviate करता था थोड़ा सा कैरेक्टर से, तो वहाँ मुझे बताता था अच्छा इसको इस तरह नहीं, थोड़ा सा ऐसे भी कर सकते हो. And then I asked him, can I bring in my element? हाँ जरूर. So he would appreciate it. He was encouraging that way. Exactly. So it was I'm very thankful to him as well. He really made an effort in that case. Yeah, it was encouraging. Yeah. So the music industry was, when you started your career, and you've said this in interviews, was not too welcoming and was very critical of you. Beginning, yes. Beginning. Did you feel the same energy in the television industry? well, yes. But सिलसिला ये था कि मैंने किया ही नहीं था इस चीज के लिए. मैं तो अपने आप को चैलेंज कर रहा था. मेरी स्टोरी ये थी कि मुझे खुद को देखना है या बताना है कि यार मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता. और जो फैंस बताएंगे कि हाँ यार आपने बहुत अच्छा काम किया है या गंदा काम किया है, तो तब समझ आ जाएगी. बिकॉज इंडस्ट्री के लोग जो है ना आपको कभी कभार मुरव्वत में भी कह देते हैं कि यार हाँ अच्छा था काम, मजा आया आपका काम देख के. फिर कभी कभार वो ये भी कहते हैं, मतलब बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं नहीं यार सॉरी मजा नहीं आया, बात नहीं बनी. या कोई बहुत ही आपका अच्छा दोस्त होगा, आपको वो ये जरूर बताएगा यार मुझे लगता है तू बेहतर कर सकता था. वो सबके सामने नहीं कहेगा. बट I remember after the premiere of
the launch of the first episode जो कि yeah. सिनेमा में की थी, Yeah. I remember going to someone's place. सैफी ने मुझे बुलाया था और वहाँ पे जितने डायरेक्टर्स थे वो हजरात बैठे हुए थे जो they're the king makers and you know जो ड्रामास बना रहे हैं Right. and all of that, जिनके बड़े बड़े ड्रामास हाँ. आ रहे हैं. So they were all very appreciative about the whole Hillman situation कि यार we weren't expecting, तुमने अपनी आंखों से बड़ा अच्छा काम लिया है, तुमने अपनी आवाज से बड़ा अच्छा काम लिया है. So I took those compliments as compliments. So I would say the directors, that fraternity, they were very welcoming. Right. They were very happy. But I am not sure about the actors, how secure or insecure they were. Right. वो तो होता है. Do you feel कि वैसे भी एक वक्त ऐसा है कि म्यूजिशियंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा टेलीविजन पे आ गए हैं और जो टेलीविजन स्टार्स हैं वो गाना गाने की कोशिश कर रहे हैं. How do you feel about that? Do you feel हर एक के अपनी जगह है या Each to their own. each to everything to everybody. हाँ, आजकल तो लेकिन बात ये है ना कि हमारे पास everybody has a different background. हाँ. Everyone, I mean, I'm nobody to criticize anybody, right? It's just that everyone belongs to a different family, upbringing is different, their school of thoughts are different, just the way they operate is different. कुछ लोगों के पास एक गाना आता है, they're like, we are stars, we are the shit. Yeah. कुछ लोगों के पास 10 गाने आते हैं, वो कहते हैं यार नहीं यार अभी और मेहनत करनी है, अभी और मेहनत करनी है, not a star yet. So it is each to their own because at the end of the day आप किसी को ये कह ही नहीं सकते या बता नहीं सकते यार तुम्हारा काम अच्छा था या बुरा था. भाई तुम्हें क्या पता किन सर्कमस्टांसेस में मैंने किया था, क्या किया, तुम्हारी इसके पीछे स्टोरी क्या थी. तुम्हारे पास तो एक टूल है ना, तुमने बस ये करना है कि हाँ मोबाइल पे अपने उठाने कीपैड और कमेंट करना शुरू कर देना कि हाँ ये अच्छा था, ये गंदा था, बुरा था, ये. मजे की बात ये है कि कुछ सालों बाद उनपे भी ऐसा ही टाइम कहीं ना कहीं लाइफ में वैसा ही आता है, किसी भी फील्ड में, किसी भी फील्ड में, चाहे वो नौकरी कर रहे हैं, चाहे वो एक्टिंग कर रहे हैं, गा रहे हैं, कुछ भी. बट उनको जब कमेंट्स फिर आते हैं तो फिर उनको तकलीफ होती है. तो जो किया होता है वही फिर काटना होता है, जो बोया होता है वही काटना होता है. इट्स लाइक दैट. सो आई बिलीव इन द फैक्ट दैट जो भी लोग आपको मिलते हैं आप उनके बारे में सिर्फ अच्छी बारे में बात कर सकते हैं और करनी भी चाहिए. एज ऑफ टू कि मैं बताऊं कि फलाने ने गाना अच्छा नहीं गाया था, उसने ये हरकत ठीक नहीं की थी, फलाने की पोस्ट ये थी, ओ देखो ये तस्वीरें सलाब के पीछे तस्वीरें खिंचवा रहा है और यू नो सिर्फ अपनी पब्लिसिटी के लिए ये कर रहा है, फलाना फलाना है, जस्ट द वे सोशल मीडिया ऑपरेट्स दीस डेज. एंड आई एम nobody to call out people and say, listen, you did this. I'm a nobody. You're not going to do that. I don't like to do that. Yeah. That's not my place. That's not my place. I cannot be in their shoes. You don't love social media, do you? I don't. I like it to the fact where I have to sort of interact with fans on one-on-one. But उसके अलावा मुझे इतना कुछ खास, I'm not a very big fan of it. I mean मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है कि कहीं पे आपको कोई भी appreciate कर रहा है और आपने उसने आपके लिए कोई चीज़ की है. Let's say for example मेरे आदीज़ ने कुरान खानी करवाई ताजदारे हरम की सक्सेस के लिए, इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी, बांग्लादेश में भी. तो आपका दिल करेगा कि यार आप उनसे बात करें, right? बिल्कुल. ऐसी बात के बाद. Yeah. So I would reach out to them and say, yeah, you guys were great. Right. I love you guys. This is good enough. What is the best and the worst feedback you got for Sangema from your fans? The best feedback. We never thought you would be able to pull this off, but you were equally good as the managers. That's a big. That's huge. That's huge. That's huge. Absolutely. Look at the guys का, you know. Absolutely. Profile. Caliber, absolutely. Library इतनी बड़ी है उनकी. Absolutely. Or you know, but I'm nowhere close to them. But you know, when they started comparing and all of that, I was like, okay, I might have done something. Something right. Something right. लेकिन मुझे था कि शायद एक दो नफरत में आके चिढ़ में आके कर रहे होंगे कि like, if you read those comments, they're like, you know, we never thought you'll be able to pull this off. और आप नमान जाज के सामने खड़े हो. And the worst was यार हिलमंत के बाल कभी नहीं खराब होते. ये तो उस हाँ बात तो ठीक है वैसे कोई बात नहीं. बट उस पे मेरे स्टाइलिस्ट की राय थी, उसने कहा था भाई जो मर्जी हो, हिलमंत लगना चाहिए. हिलमंत उसके बाल बेशक हम एंड में खराब करेंगे और वो खराब हुए थोड़ी जब वो भागा था थोड़े से खराब हुए. थोड़े से. So yeah, and I think the worst was
माना ये हमारे कल्चर में नहीं होता है, ये क्या तुम लोगों ने गकमक कर दिया है और हाँ ये वो. And about the, I think there were talks about dialect as well, pronunciation और इस तरह की बातें भी थी. I think उसके अलावा तो इंडिया से कितने लोगों का जो मेरे Right. फैंस थे उन्होंने कितना अप्रिशिएट किया कि oh my You've got a god. huge following for Yeah. Pakistani dramas in Yeah, India across the and border. Yeah. and the fact that they told me that we have started just because of you, we have started watching other dramas as well. Because your following in India is bigger than the following of So Pakistani all by the dramas. grace Yeah, of it's all God, I'm works. glad that I'm bringing that to Pakistan. Yeah, yeah. And with my small amount of contribution to the fraternity and the industry, I think across the globe, अगर कोई चीज गई है, तो जबरदस्त बात है. I'm happy with it. Absolutely, absolutely. So you're happy with it, and it was a great stint. और बहुत अच्छा response भी मिला हेलमंद को. Is this something that you're going to continue now as part of your career, acting? Of course, I will continue it. Of course. Of course, I'd love to because again, depends on the script, depends on the people that I'm working with. Because I got a great team. Momina was fantastic. She was very helpful. Dured was very helpful. Safi was the whole cast was very helpful throughout. तो अगर इस तरह के लोग मिलेंगे मैं क्यों नहीं काम करूँगा? I mean, मजा आया मुझे काम करके. And I don't think so कि पैसा ही सब चीज होती है. Right. For my I did it for my personal satisfaction. And I loved it. I enjoyed it. आज भी लोग जो है मुझे उन डायलॉग्स के बारे में बात करते हैं. और मैं जब स्टेज पे बोलता हूँ, अरे ओ लस्मीरान के यतीम हेलमंद, there's a roar that comes. That's part of your now set. Yes, Like, Sangema is part of my set. Yes. Superb. Yeah. That is amazing. Do you think that you've picked up a new fan following because of your acting? Yes, correct. I'm not sure how big of fans they are of my singing, but acting के तो वो बन गए हैं. You're a class apart, blah blah blah, and all of that. इस तरह की comments तो बड़ा खुश होता है इंसान जब उसको पढ़ता. पहले मैं कभी नहीं कमेंट्स पढ़ता था अपनी सिंगिंग के बारे में. इस दफा मुझे पढ़ने थे because I wanted to know मैंने कुछ ठीक भी किया या नहीं किया. So yes, there is a new fan following. There is, come up. Yes. So obviously, I'm not a music critic at all, and you're going to educate me here. But there's reinvention happening in your music as well. हमने पिछले एक साल में देखा. There was a lot of qawwali in the middle, and there was a lot of pop music and Bollywood music. उससे पहले there were some great albums, but then there's been rap, and you've been collaborating with a lot of young artists. So what's happening? Is this like a new identity you're carving for yourself? I read somewhere that you wanted to create a new genre in music that would be related to like the Atif Aslam genre. जैसे हम कहते हैं ना Rahman-esque music है. You can immediately recognize के A.R. Rahman की music है. So what's happening there? Okay, so part of it was about encouraging the young artists. Right. Part of it was reinventing myself. Right. And part of it is making my own genres, making my own sort of music, regardless of if it's a hit or a miss. Because now you're at a stage where you have done a lot of shows. No one has done these kind of shows from our country. And no one has, alhamdulillah, touched those many hearts, alhamdulillah, in terms of music, all by the grace of God. और मतलब वो कर लिया. उसके बाद अब कुछ अपने लिए जो है वो करना है. So which is why all these this whole experimentation that has been going on, Sajan Dasna, Go, Cricket Khidaiye, Ajnabi, Raat. So all these things they're purely my gut. So which I really wanted to put out. It's working. Well, I'm glad. How do you gauge a good song from a bad song these days? There's no bad song. song. There's no good or bad song. It's just a song. जो पसंद आ जाए It's my piece, yes. So I mean, I've believed in the fact that people were doing music for me when I was in Bollywood, and half of the time they would make a composition and do it, and make me stand in the booth, and they would say, "Okay, आप इसको इस तरीके से गा दें." अब जब मैं 60% वो गा चुका होता था जिस तरीके से उन्होंने गा होता था, they would ask me to sing it in my own style. Right. Every director that I've worked with, really, music director, interesting, would actually ask me to sing it in my own style.
So which was basically the flavor of the music director and Atif. Right. It was a collab. Right. So which is why it used to be a little different from the rest of the Bollywood music that was happening at that point in time. But for me now, I think मेरा जो creative mind है वो उसकी satisfaction जो है वो बहुत ज़रूरी है मेरे लिए. Right. Right. जी तो I've been working on it. I've been making new music. I'm not thinking way too much. Yes, there is commercial music. There will always be non-commercial music at the same time. Of course. कुछ उसकी नीश बनेगी, कुछ इसकी नीश बनेगी. कोई भी इंसान आज की तारीख में अगर गाता है, उसके फॉलोअर जरूर होते हैं. राइट? चाहे वो स्टार बनता है या नहीं बनता. बिल्कुल. स्टार बनना क्या आसान हो गया आजकल? आसान नहीं है. उसको सस्टेन करना मुश्किल हो गया. बिकॉज जब आप पहले गाने के बाद ये समझना शुरू करते हैं, वाओ मैन, दिस वाज क्वाइट इजी. अच्छा ये होता है, कूल, दैट्स फाइन. मुझे तो उसके साथ काम नहीं करना, मुझे तो अपना काम करना है. और मुझे बस अपनी जोन में रहना है. और बस मैं बस लिखता रहूंगा, मैं बस करता रहूंगा. वो पता चलता है एक ही गाने के बाद 3 साल बाद वो खत्म. वन हिट वंडर. What kind of work goes into the making of a career of the type that you have? You have to thick shell. I mean, I personally think rough the wind, huh? Of course. I mean, I personally think if you've been brutally broken and you're still gentle and kind to people, then you're a badass. Yeah. And it's very tough. Yeah. To be in that spot. आप उस चीज को इमेजिन करना ही बड़ा मुश्किल काम है कि आप इसको रोजी रोटी बनाते हैं. और ग्रेटिट्यूड एक ऐसी चीज है जो कि मैं हमेशा मेंशन करता हूँ, उसके बगैर कुछ नहीं है. अगर आपको नहीं पता कि ये चीज आपको अल्लाह ताला ने दी है और इसका शुक्र अदा करना है, then you're nothing. Then you're nothing. And you've always maintained that stance. I mean, you've been very spiritual through your success. जो कि कभी-कभी मैं देखती हूँ और मुझे बड़ी हैरत होती है, क्योंकि बहुत फ़र्क है एक पॉप स्टार इमेज का या एक रॉक स्टार इमेज का दुनिया में ख़ास तौर पे. Back in the 70s, it was sex, drugs, and rock and roll. That's what it was all about. But you've been very spiritual. बहुत से लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि is it real? Because हमारे मुल्क में म्यूजिक तो अच्छा बिकता ही है, लेकिन रिलीजन भी बिकता है. So, how do you respond to these questions? अच्छा, मुझे लगता है कि बिकता तो है, लेकिन उसको अगर गलत तरीके से बेचा जाए तो उसके भी वो है ना, प्रोज एंड कॉन्स हैं और उसको तरीके हैं बेचने के. राइट? अब मेरा ताजदार हरम करने का मकसद ये बिल्कुल नहीं था कि मैंने रिलीजन को बेचना है. मुझे तो एक कवाली रिवाइव करनी थी और एक ये भी काम करना था. हालांकि कितना बड़ा रिस्क था. साबरी ब्रदर को मजाक तो नहीं. राइट? तो कितना बड़ा रिस्क, मजाक तो नहीं था. राइट? मेहदी हसन खान साहब को मजाक तो नहीं. सो उनको वापस लाना था, उनकी याद वापस लानी थी कि उन्होंने कितना काम किया हुआ है, क्या कुछ किया हुआ है. उनके ऐसे पीसेस जो हमारी जनरेशन ने नहीं सुने हुए या आने वाली जनरेशन ने नहीं सुने हुए, उनको पता. पहले तो उनको पता भी नहीं था ताजदार हरम क्या है. बिल्कुल. अब तो उनको पता है. दे सिंग अलोंग. सो मेरा मकसद एंटायरली यही था. और अगर ये इसको बेचना मेरा मकसद होता तो फिर और भी लोग थे, वो भी बेच सकते थे. उनका क्यों नहीं बिका? राइट? सो एक ये चीज है. और दूसरी ये कि I think it has been my upbringing. I have had my times as well. Yeah. I won't say that I have always been a spiritual person, but yes, there has always been a part of me who always wanted to go back and be connected to the roots. कि यहीं से शुरू किया था. और उसके बगैर कुछ नहीं है. अगर तुम्हारे दिल पे जंग लग गया है, उसको साफ करने की कोशिश करो. And that's what we all do. Yeah. Some try, some don't. Some think कि that's the way it should be. This is life और यही जंग लगा रहना चाहिए. बस ठीक है, कोई बात नहीं, अल्लाह माफ कर देगा. I'm not saying I'm a great soul, I'm a saint or something, but everybody has their days. So absolutely. So इस तरह की बात. Absolutely. No, I think it's very admirable the way you've maintained that, because it's encouraging. I try. Sometimes it's taken really negatively. Sometimes it's
taken very positively. But I don't have to think about that. I You have to don't. think about the fact that as long as I'm making people happy Yeah. and keeping myself sane, Yeah. that works. I'd love to know what the protocol is of you performing Tajdar-e-Haram. Oh, the protocol. Huh. Well, sometimes it's a wuzu. Huh. Sometimes it's taking off my shoes. Huh. Sometimes it's switching myself off. Most of the times it's switching myself off. And when I'm starting Tajdar-e-Haram, तो मैं दुरूद पढ़ रहा होता हूँ. And even in the middle of it, middle of the sections, I somehow feel that there is a bigger power that I'm singing to. Absolutely. And our dua before the concert is about the fact that कि वो ताजदार-ए-हरम कबूल हो जाए. बिल्कुल. Yeah. It's not about anything else. Yeah. My dua is about आज का दिन, आज का जो कॉन्सर्ट है, आज के जो लोग हैं, सब खैर खैरियत से आपके हवाले हैं. आप इज्जत देने वाले हैं. और ये जो ताजदार-ए-हरम पढ़ेंगे, ये अपने हुजूर कबूल फरमाना. And is it part of every concert? It is part of every It concert. is now. Yes. Oh, that's amazing. It is. That's amazing. And I'm sure it's superbly received. It I is mean, superbly yeah. received. Standing ovation all the time, alhamdulillah. Huh. Yeah. People, people from Brisbane, from Fiji, UK, Canada, US. बहुत सारे ऐसे लोग जो Asians नहीं भी हैं. What's been they your have most received it. surprising crowd? जो expected नहीं थी. Pakistanis भी नहीं कम हैं लेकिन. West Indies, Suriname. Yeah. वो हमने किया हुआ है. और I think one of the shows, I think कुछ गोरे लोग भी आए हुए थे और वो उनको म्यूजिक की सिर्फ कुछ लैंग्वेज तो उनको नहीं समझ आ रही थी. होती भी नहीं है ना? नहीं होती. तो होती भी नहीं है. तो वो स्पेशली शलवार कमीज पहन के आए थे. Wow. Huh. To endorse the fact that it was very sweet of them. Yeah. And they talked about Tajdar-e-Haram and there's like we love your Right. music. We Yeah. don't know what you're talking about. Huh. But this is one qawwali or song that basically has changed our mindset regarding your country, Yeah. your religion. That's amazing. It's also amazing that people tune into your personal songs more than your commercial hits, Correct. वो भी एक बहुत कमाल की बात है. Correct. But Bollywood's like part of our playlist all the ऐसे ही time. ऐसे ही है ना? ऐसे ही होता है. But you've managed to change that. ऐसे ही होता है. अभी recently एक आर्टिस्ट ने जो है कुछ comments किए थे about the fact कि अगर किसी ने म्यूजिक सीन को बॉलीवुड में चेंज किया है तो वो ये बंदा है पिछले 15 साल में. Absolutely. और जिसकी वजह से उसको काफी बैकलैश भी हुआ था. I really admire his singing. मायरी गाया था उन्होंने. मायरी, it was our Euphoria. teen anthem. Euphoria. Yeah. Yes. Palash, right? Palash. Yeah. Dr. Palash Sen. Exactly. He's brilliant. He's great. Critic नहीं उतनी म्यूजिक का पता है लेकिन थोड़ा Yeah, बहुत. he's great. So he was appreciating that, and then it's very nice of him to say that. उसके पीछे लोग भी पड़ गए अब. अब political divisions हो गई हैं, अब क्या करें? Of course, हो गई it has been there for. Yeah. ये तो होना ही था. होना ही था. What I love about your work in Bollywood is कि आपने एक इंटरव्यू में भी बोला था कि क्रेडिट मिले ना मिले आपकी आवाज हर बंदा पहचानता है. You just don't need that name to be pinned to a song, कि sung by Atif Aslam ने. आवाज speaks for itself. Correct. But is that corridor still open? No, actually, I think I haven't been there from the past 7 years now, 6-7 years. 6-7 years. But recordings तो चल रही थी कहीं और. Recordings नहीं, उसके बाद भी बंद हो गई थी. दुबई में भी नहीं हो रही थी. नहीं, बिल्कुल नहीं हो रही थी. Right, since 2016. Exactly. Right. उसके बाद फिर कोविड भी आ गया था और I had started working on my own music. और बात यही है ना कि मैंने शुरू यहीं से किया था ना. Yeah. Of course, because मेरी पहली एल्बम जब आई थी वो आदत यहाँ पे हिट हुआ था. उसके बाद फिर महेश भट्ट साहब ने वहाँ बुलाया था. Right. So तो जो म्यूजिक मैं पहले से कर रहा था वो तो करना ही था. Right. वो वहाँ का सिर्फ सिलसिला ये था कि वहाँ का एक्सपोजर डिफरेंट था. वहाँ की बॉलीवुड इंडस्ट्री डिफरेंट थी. वहाँ गाने का तरीका अलग था. म्यूजिक कॉम्पोजिशंस अलग थी. ज़्यादा फिल्मी थी. सिचुएशन के लिहाज से गाना बनता था. देयर इक्विपमेंट वाज बेटर in the studio. Of course. Massive equipment and massive studios. And their market reach was like a little, it was great.
So that was a lot of exposure. Yeah. I literally sort of lived there. Yeah. and Yeah. and अब मैं उसको देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मैंने how lucky I was Yeah. कि मैंने वहाँ काफी अरसा गुजारा है, टाइम गुजारा है और इतने फैंस जीते हैं वहाँ से, बिल्कुल, जो कि अभी भी कहते हैं वो एक हैशटैग ट्रेंड कर रहा होता है, ब्रिंग बैक आतिफ असलम. आपके बिलबोर्ड्स लगे हुए हैं इंडिया में. I mean, that's for a Pakistani artist, that's amazing. That's correct, right? Yeah. So बस यही उनका प्यार है. और मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो इंडिया से ट्रैवल करते हैं मेरे शो देखने के लिए, दुबई में या अमेरिका में या कनाडा में, which is brilliant. I think this is mind boggling. Absolutely. But you have no like lost remorse के काश वो वक्त वापस आ जाए या काश का I don't think मेरी जिंदगी में जगह है नहीं है. because I've been through really tough times. Yeah. In the beginning I understood. उससे ज्यादा क्या होना था? उससे ज्यादा तो नहीं हो सकता था ना कुछ. So उसने मुझे बड़ा जबरदस्त किस्म का लेसन दे दिया हुआ था कि कुछ भी हो जाए that's fine. एक चीज आपके पास है और वो अल्लाह ताला ने जब तक आपसे नहीं लेनी तब तक आपके पास है वो. Yeah. वो आपकी आवाज है. Yeah. और वो आपका टैलेंट है, उसको आप जितना ब्रश कर सकते हैं. टैलेंट भी एक खास हद तक आपको लेके जा सकता है, लेकिन जो उसने देना है वो आपको मिलना ही मिलना है, चाहे वो रिस्क है, वो इज्जत है, वो आपका मकाम है, वो जगह है, वो आपको मिलना ही मिलना है. और वो आपसे कोई नहीं ले सकता. और वो उसने लिखा है कि वो कहाँ है मेरे पास, कहाँ से आना वो है. बड़ा खूबसूरत है ना. झूम आप तो परवीन के लिरिक्स हैं कि जो है तेरा मिल ही जाएगा करके कोई बहाना मिल जाएगा वो. मिल जाएगा. बिल्कुल. बिल्कुल. That is true. That is true. So you're blessed that way. You're blessed that way. Correct. I'm lucky. I'm blessed. हाँ. और हाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये करना चाहते हैं, इस जगह पे आना चाहते हैं, but it's not very easy. It's very lonely on the top. Definitely. मुश्किल है, आसान नहीं है. और ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जगह भी है. बड़ा अजीब सा मकाम. मगर जब शुरू किया था तब सोचा नहीं था कि सोचा तो यहाँ पे सोचा तो पहले गाने के बाद भी नहीं था कि क्या होगा. मैं क्या एक एल्बम आ जाएगी उसके बाद क्या होगा. When did you realize कि okay this is now serious business? I think after the second album. दूरी के बाद दूरी के जब बिलबोर्ड्स लगना शुरू हुए थे. तो आई रिमेम्बर हमने ARY को दी थी, हाजी साहब ने रिलीज की थी वो एल्बम, एंड अ लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू हिम. ही पुट ऑन द बिलबोर्ड्स एवरीवेयर, इन लाहौर, इन कराची, इन इस्लामाबाद, मैसिव ह्यूज बिलबोर्ड्स ऑफ दूरी. एंड दैट वाज द टाइम व्हेन आई रियलाइज्ड, व्हेन आई वाज इन माय ब्रदर्स कार. आई डिडंट हैव माय ओन कार एट दैट टाइम. और भाई की गाड़ी में बैठा था, आप बिलबोर्ड देखने चलते हैं, बिलबोर्ड लगा हुआ है. I was that crazy क्योंकि तो वो जब देखा तो then I realized कि यार अल्लाह पाक ने कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हुआ है. कुछ हुआ है. Yeah. Although जलपरी was so huge. Exactly. उसका ये था ना कि वो एक नीश बन गई थी कि हाँ एक अलग सा म्यूजिक है, ये क्या करना चाहता है, किस तरह का म्यूजिक है, थ्योरी नहीं है इसमें, और ये चीज हमने पहले नहीं सुनी हुई. आदत में तो शक्ल भी नहीं देखी थी ना, वीडियो में तो शक्ल भी नहीं थी. तो जलपरी के बाद वो शक्लें नजर आना चाहिए. फिर अजीब सी वीडियोस कर रहा था, सस्ती वीडियोस जो होती हैं उस वक्त ऑफ कोर्स हैंड टू माउथ वाला सीन होता था. पैसे ही नहीं होते थे तो डायरेक्ट उल्टी पुल्टी रखते, कैमरे के सामने खड़ा करके डांस करवा दिया. इवन ऑल सो मैं उस टाइम से भी गुजरा हूँ ना, वेरी प्राउड ऑफ इट कि मैंने वो किया जो मेरी स्ट्रगल थी, कि मैंने वो किया. Now when I look back at it, I was like, wow, man. But it's great, right? Great. It's a good feeling. It's great. I mean, it's a good feeling. It's beautiful. I mean, अपने कैमरे के सामने डांस करना, and it's then real. It's real. But then Rafta Rafta is also real. Correct. And it's such a beautiful video. It is. And it shows such a beautiful side of Pakistan. Of course. And you're with Sajjal, and then there's Ajnabi with Mahira, and and you name it. Of course. So it's really cool to look back and say, okay, wow, yes. Itna. Yes. Long way. But Atif, every path is lined with difficulties. Yeah. So how would you say that your professional and personal life has been affected by fame and fortune? Yeah. Has it been? Well, definitely, yes. It has. I think I've given my 17 years to my career. I have not looked back at anything
मैं जिस तरह कहते हैं ना, एक घोड़े को आप वो पहना देते हैं, Blinders. ब्लाइंडर्स लगा देते हैं, मैं बिल्कुल, मेरे ब्लाइंडर्स लग चुके हुए थे और मेरा मकसद सिर्फ यही था, टू जस्ट डू गिग्स and to make music and to reach out to the world in every possible way. And hey, there's an artist, his name is Atif Aslam. Yeah. He's from Pakistan, and this is his music, and to sort of inspire them in so many different ways. What was lighting that fire? The drive, Yeah. actually, the fact that so when I write music, people think that I'm a very sort of a romantic person, and you know, मेरा Bollywood पता नहीं कितना कोई romantic आदमी होगा, but a lot of it has to do with my relationships in the past, and how I never believed in getting married. Oh, really? Yes, before I met Sarah. Before you met Sarah. Yes, but when I met her, Atif, कितनी relationships थी? just a couple. Just a couple. Off the record, no. It's on, everything is on the record. Yeah. Heartbreaks? Well, just I think two. Two heartbreaks. Maybe, yes. कहते हैं ना, अब म्यूजिशियन का दिल ना टूटे तो तो अंदर से आवाज उनका- नहीं आती. Exactly. वो हार्टब्रेक के बाद. So, आई. I mean, एक तो पहले इस पे मानना ही नहीं था, यकीन ही नहीं था कि यार लव कोई चीज होती है, रिलेशनशिप कोई चीज होती है. फिर एक बंदा आपके पीछे पड़ जाए और आपको इंसिस्ट कर रहा हो कि नहीं, होती है कुछ चीज, होती है कुछ चीज होती है. फिर आप जब 2 साल बाद गिव इन करते हैं, तो गिव इन करने के बाद आप टाइम अच्छा गुजारते हैं उनके साथ, और फिर 4 साल बाद पता चलता है मैं सही कहता था, नहीं होती. नहीं होती. Yeah. So then you start questioning yourself and challenging yourself कि यार ये क्या बकवास, क्यों, why'd you waste so many years of your life. तो पहली दफा Then दिल I never टूटा तो looked अंदर back. से कौन सा गाना निकला? उस वक्त गाना नहीं निकला नहीं था, निकला उस था. वक्त सिर्फ सेंसिटिविटी थी कि हाँ ठीक है, यार ठीक है. उस okay. वक्त मैं एक्सप्लोर कर रहा था कि ये क्या हुआ है. सेकंड टाइम पे मुझे लगा था कि हाँ नहीं. अच्छा. सेकंड टाइम में मैं ऑलरेडी गा रहा था, लेकिन उसके बाद जो ड्राइव थी वो और बढ़ गई थी कि मतलब हाउ डेयर यू काइंड ऑफ सिचुएशन. देन दे वर ब्लाइंडर्स. Right. Then thankfully I met Sarah, and she had shown me the best side of life, Right. because I was I am, but I was a workaholic. ठीक है, और मुझे टेम डाउन करने में सिर्फ सारा का हाथ है. अगर वो ना होती तो शायद आज भी मैं अभी कॉन्सर्ट कर रहा होता. Wild Atif Aslam. हाँ, मैं अभी भी कॉन्सर्ट कर रहा होता, मैं वाइल्ड आतिफ असलम. और उसके आने से मेरी जिंदगी में मुझे कॉन्ट्रास्ट जो है वो नजर आया है, मिल गया मुझे वो कॉन्ट्रास्ट, जिससे मुझे उसने बताया कि हाँ, लाइफ में सिर्फ एक चीज नहीं होती, सिर्फ आपने कमाना नहीं होता, सिर्फ कफालत जिम्मेदारी नहीं होती. यू नीड टू सिट डाउन विद योर लव्ड वंस एंड टॉक टू देम. Yeah. Because I had thought that everyone operates with the same thing. एक डॉलर साइन है हर बंदे के मुंह पे और बस उससे वो चलता है और किसी चीज से नहीं चलता. But no, I realized it when I had my own kids. Right. When she gave birth to my beautiful kids. Yeah. तो उसके बाद मुझे समझ आई कि हाँ, उसकी क्या जगह है, उन बच्चों की क्या जगह है, और मेरी क्या जगह है. And when half of the time Abdul Ahad used to come to me and he used to say कि बाबा आप तो घर पे नहीं होते. So I felt, मुझे किसी ने थप्पड़ मारा है ना. हाँ. मुझे ऐसा लगा. And I discussed it with Sarah and she's like, That's reality. That's reality, and that's Yeah. the time of realization. Yeah. Yes, no matter how many times we go with you, you're still missing, of course, because you have to do and perform and all of that. Yeah. And I cannot blame my profession, Yeah. right? Because this is love for my art and Yeah, for people and for absolutely. whatever you call it. बिल्कुल. मैं अपनी तरफ से ये कर रहा होता हूँ कि हाँ यार, I have to do it for my kids, but no, I think they need my time as compared to whatever. So she's the only one, and she's a very big heart. I mean, on many different levels. मतलब देखने में तो खूबसूरत है ही, है हसीन. देखने में तो हसीन है. मतलब पूरी दुनिया में मैंने जितनी लड़कियां देखी हैं जिंदगी में, I still think that she's the most beautiful girl. As you should. No, it's not As about. your wife- It's हाँ, not मतलब just होना, that. I yeah. genuinely think that जबरदस्त. she's Yeah. pretty. और जो उसने, I mean, मेरी लाइफ में changes लेके आई है, they're just
mind boggling to make me realize कि किसकी क्या जगह होती है, how what are work ethics, what are family ethics, you know, मेरे क्योंकि घर में कोई लड़की थी नहीं सिवाय मैं कहने लगी थी you're one of four brothers and then you have two sons. Exactly. तो घर में कोई मेरे भाई मतलब बहन नहीं थी हमारी, ठीक है, सिर्फ वालिदा ही थी। और उनके साथ भी एक एक रिस्ट्रिक्टेड सा बॉन्ड ही होता है बेसिकली। यू आर लाइक शाय टू सॉर्ट ऑफ हग योर मदर एंड ऑल दैट। तो मैं अब जाके कहीं उनको कर लेता हूँ हग, पहले तो वो भी नहीं करते थे हम। सो दैट इज द मोर रीजन। और मुझे लगता है कि यही लाइफ का एक साइकिल है जो चलता जा रहा है और ये कभी रुकेगा नहीं। So, which is why I need to stop somewhere and I had to tell myself, hey, fine, you can earn money later. Yeah. That can also happen. Or maybe this is it. Or maybe, or maybe, your kids need like more time, right? So you should just... Yeah, they're growing up. Relax. They're growing up. Yeah. You don't want them to hate you. Right? And grow up and say, बाबा आपके पास तो टाइम ही नहीं था, आप किधर थे? Yeah. Yo, जब मैं पूछ रहा होता, जब मैं उनसे पूछूंगा, yo, you're not giving me time. Yeah. तो उसके बाद वो मुझे कह रहे हो कि यार, sorry, you daddy, never gave us time. Yeah, buddy. You're not cool for us. Yeah. So I don't want to hear that. You don't want to hear that. Yes, which is why I think I've started doing limited stuff now. Okay. And I'm cutting down on a lot of stuff at the same time. मैं उसको खुद पढ़ाना शुरू हो गया हूँ. और I'm loving it. Really? मुझे बहुत मजा आना शुरू हो गया उसको पढ़ाने में। इसी तरह से मेरा उसका बॉन्ड बढ़ रहा है। So that's the best part about it. And इसमें सारा रोल जो है वो सारा का। Of course. A woman makes a lot of difference Of course. in the house. Of course, right? Of course. Absolutely. It goes without saying. Yeah. So that was the personal side of fame and fortune and how it affected your life. Yeah. Professionally, how did the corporate culture affect your professional life? कभी कोई ऐसा लगा कि बहुत डिक्टेशन हो रही है और अंदर का आर्टिस्ट मर रहा है या नहीं you call the shots? I have never been very keen on that. I mean, corporate आता है, मेरे मैनेजर से बात करता है, मेरी टर्म्स पे मानता है। Corporate we're talking about like the Coke Studios or the Velos or the PSLs and that kind of. कोई भी corporate होता है, वो आता है, वो मेरे मैनेजर से बात करता है, मेरा मैनेजर बताता है भाई ये कर सकते हो, वो कहता है नहीं कर सकते, हम कहते हैं सॉरी, वो कहते हैं दोबारा करते हैं, फोन करते हैं भाई ये कर सकते हो, वो कहते हैं सर आप ऐसा करें ना रेट्स कम कर दें, तो मेरा मैनेजर कहता है सॉरी आप विंडो शॉपिंग के लिए मत आया करें। Right. So they're like basically that's the way it is. I mean there's a hard and fast rule कि यार आपने किस लिए आतिफ असलम को फोन किया है? इसलिए फोन किया है कि आप अपने ब्रांड का जो है वो नाम आगे लेके जाना चाहते हैं, या आपने सिर्फ इसलिए फोन किया कि वो आके आपको परफॉर्म कर दे? नहीं सर आप सिर्फ 15 मिनट के लिए परफॉर्म कर दें। सिर्फ व्हाट इज 15 मिनट? हाँ व्हाट इज 15 मिनट? आप सिर्फ 2 गाने गा दें। व्हाट इज 2 गाने? हाँ अगर मैंने अपीयरेंस कर दी है तो इसका मतलब है कि इट्स एन अपीयरेंस। Yeah. देयर इज नो 15 मिनट, देयर इज नो आधा घंटा, देयर इज नो घंटा। Yeah. इट्स अ फुल फ्लेज्ड परफॉर्मेंस। आई हैव Yeah. कम टू योर थिंग एंड आई हैव एंडोर्स्ड इट, राइट? So you might as well pay the artist. Absolutely. Right? It's their right. And also to all the people who are like all the artists who actually go for free, please मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि कभी भी फ्री मत जाया करें, ना करें, और अपने आप को अंडरसेल मत किया करें। आपकी एक वर्थ है, उसको जरूर बनाएं, और इन लोगों के पास बहुत पैसा होता है, लिया करें इनसे पैसा। ये समझ कब आती है कि वर्थ क्या है अपनी? जब आप भूखे नहीं होते, राइट, जब आप भर जाते हैं ना, जब आपका डोपामाइन बड़ी गहरी बात की है। I completely जब आप get भर it. जाते हाँ. हैं, जब आप कहते हैं कि हाँ यार कोई बात नहीं, जो आपके हिस्से का वो आपको मिलेगा। हाँ, आप और भर जो जाते जाता है हैं, जब बजाय। आप उतावले नहीं होते। Yeah. हाँ सुबह को ये शो पकड़ो, शाम को ये शो पकड़ो, सब पकड़ते हैं, मैंने भी पकड़े थे, हाँ. फाइन, लेकिन you should learn when to say no. And there's Yeah. no harm in saying no to people. You know why? Because I've learned it the hard way. I used to believe my music can change people. Yeah. I used to believe that I can talk to them and change them. No, I don't want to change them now. Because as a matter of fact, मैं उनको change करते करते उनकी energies ले लेके negative हो गया.
जो जितना मैं पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया था, राइट? So in order to change them, Yeah. I need to be happy here and positive here myself. I need to make myself happy first, Yeah. and then I can work on Yeah, others. yeah. I sense a very calming energy in you now. Yeah. So I think that negativity is over. Yeah, even for the fact that, sometimes, people become very awkward, especially stars that, we've repeated our clothes and stuff. It's like, I don't have any shame Yeah. in wearing my own clothes. मैंने पैसों से खरीदे हैं, महंगी शर्टें हैं, Yeah. मैंने अपने पैसों से खरीदे हैं, मैं Yeah. उसको रिपीट करूं क्या? क्या ऐसा नहीं हुआ होगा that a pair of jeans is like their favorites हाँ. and they have never worn twice? Not possible. 1000 दफा हुआ होगा ऐसा कि उन्होंने वो जीन्स जो है बार बार पहनी होगी, लेकिन ऑडियंस के सामने पता नहीं चला होगा, या कोई ऐसी टॉप होगी या कोई ऐसी शर्ट होगी, इनले होगी, ब्लैक या व्हाइट, हाँ. जिन्होंने पहनी होगी और वो ऑडियंस को पता नहीं चला होगा. इसका क्या मतलब है? आप रिपीट नहीं करते कपड़े? करते हैं, हम करते हैं. Is there anybody you can't say no to? My kids, Sarah. No, outside of Sarah, your kids, your parents, your family. Yeah. Outside of that, कोई कहे कि यार Atif come sing. Is there anybody you wouldn't say be able to say no to? Well, no, in the sense as compared, like, come for free and perform. हाँ, मतलब I can say no to everybody. You can say no to everybody. Yeah. I have said no to people that you would not even believe. I cannot take names. हाँ. I've said no to them. And back in the days, I have had repercussions as well. But even then, I mean, rules are rules. We are artists. We are musicians. Are musicians also and artists also rebels? Yes, Or do they have to be? Of course they are. Of course, some are. They don't have to be. Yeah. They are. Are you? I'm not. You're not. I'm not a rebel. Huh. I'm not a rebel. I don't believe in changing the world. I believe in the fact that if my music has to do something, it'll change people by itself. If someone has to take something from my music, they will take it by themselves. Yeah. Why do I have to preach and ठेका क्यों लिया हुआ मैंने इस चीज़ का कि हाँ यार मुझे पाकिस्तान बदलना है, मुझे फलाना बदलना है, मुझे उसके साथ जो स्टोरी हुई है उसका मर्डर कैसे हुआ था तो उसके लिए लिखना है और no bro. नहीं. It's not me. Yeah. Why? Because it's not my job. But with the influence you have, do you feel you have a responsibility? Well, that's not my responsibility. It's not. It's the responsibility of the bigger guns. Yeah. The people who are running the, running the country. Yeah. Right? एक मुल्क का बादशाह ही जो होता है वो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर क्या हो रहा है, सड़कों पे क्या हो रहा है, जलसा कौन सा निकल रहा है, क्या निकल रहा है, क्या हो रहा है. ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. कौन सा चैनल बंद हो गया, कौन सा नहीं, उसके लिए मैं लिखना शुरू कर दूं. नो, आगे खाने के लिए पैसे नहीं है लोगों के पास. राइट. सो मतलब हर किसी की एक अपनी भेड़ चाल है, हर किसी की एक अपनी सोच जो है वो चल रही है कि हाँ मैं किसी तरीके से बता दूं मैंने ये किया है. You seem to be in a very, very sorted, mashallah, sorted, secure place. कोई insecurity आती है कभी नए लॉट को देख के, खास तौर पे young rising talent? Is it natural for a star even as big as you to feel for a minute that जो चीज़ इतनी ऊपर जा रही है वो नीचे तो फिर उसने आना है? It's lonely at the top, but the journey down isn't so pleasant. Yeah, but उसमें insecurity क्यों होनी चाहिए? उसमें खुशी क्यों नहीं होनी चाहिए? उसमें ये क्यों नहीं होना चाहिए कि यार वो अच्छा काम कर रहा है? उसमें ये क्यों नहीं होना चाहिए कि यार हाँ वाह क्या म्यूजिक पीस बनाया है, वेरी गुड, क्या लिरिक्स लिखे हैं, हु इज दिस गाय? उसमें ये क्यों होना चाहिए नहीं मैंने उससे ज्यादा अच्छा करना है? मैंने किया है अपने हिस्से का. Absolutely. मुझे लगता है कि आपको अगर मैं इनसिक्योर होना शुरू कर दूं लोगों से, आई थिंक इट विल नेवर बी इनफ. इनसिक्योर लोग वो होते हैं जो हमेशा किसी ना किसी चीज की ताक में होते हैं, जिनको और चाहिए होता है, और बड़ा करना है, और बड़ा करना है, और बड़ा. वो डोपामिन लेवल जब फुल हो जाता है ना ग्लास का, तो उसके अंदर और नहीं जाता पानी, वो गिरता है बाहर. गिरता है, या गिर रहा है अभी, गिर रहा है. वो गिरता है तो वो गिर रहा है. अल्हम्दुलिल्लाह वो गिर रहा है. जबरदस्त. वो अल्हम्दुलिल्लाह गिर रहा है. गिर रहा है. तो उसको
अल्हम्दुलिल्लाह उसको और ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की. You've worked with so many young artists in the last 1 year. You've worked with Faris Shafi, you've worked with Abdullah Siddiqui, Yeah. and many others. आपको ख्याल है कि where do you pinpoint talent? Like solid, जो कि आगे जाएगा. Well, the fact that I think Faris Shafi is amazing. Yeah. He's brilliant. He's outstanding. The way he operates, he's a genius. I don't know what's his marketing strategy is. He's also confused because मुझे लगता है कि वो कहीं इस चीज़ में गुम हो जाता है कि यार ये ठीक है या ये है या नहीं है. राइट वो कभी कभार अब आके शायद कॉन्शियस होना शुरू होता है कि ये ठीक है या नहीं है. I have had discussions with him about his music. Right. And I think if he channelizes his own direction, जो कि थोड़ी सी मतलब जो जिस तरह की पहले थी वैसी नहीं होगी, तो it'll be a lot more better for him. Right. And मुझे तो बड़ा मजा आया था उसके साथ क्रिकेट खिलाई करके. और जबरदस्त आदमी है. हाँ. उसके साथ बैठ के आप सिर्फ हंस सकते हैं. हाँ. और अब्दुल्ला सिद्दीकी is also very talented. I believe that मुझे जो इसमें एक चीज लगती है, मुझे लगता है थोड़ा सा शाय है, बात कम करता है. और लेकिन म्यूजिकली वो भी एक जीनियस है. जबरदस्त है वो. दोनों जबरदस्त हैं. Full endorsement. They're not one-hit wonders for sure. No, they're not. I think Yeah. उन्होंने काफी मतलब उस जॉनरा में काफी काम किया है. Yeah. और I think promising तो है. अब डिपेंड करता है अपनी मूव्स कैसे सेलेक्ट करते हैं, क्या पिक करते हैं, क्या चूज करते हैं. उस पर बहुत डिपेंड करता है. Anyone else that we're not that aware of right now, but you predict that this guy is going to go or this girl is going to go really big? Honestly speaking, I have not heard too many people. No. I've not heard too many people Right. recently. I think they're singing in one direction. Right. Yeah, one sort like very similar music. Hopefully they'll figure it out. Yeah, hopefully. Hopefully they'll figure it out. Of course, वक्त लगेगा. Right. और उसमें लगता ही है. और मैं कॉर्पोरेट से ये ज़रूर दरख्वास्त करना चाहूँगा कि जो आर्टिस्ट होते हैं, उनके जो गाने होते हैं, उनके राइट्स आर्टिस्ट के पास होने चाहिए. It should be with them. It's their right. Yeah. It's their solid right. Because if they are making money out of it, the artist should also make money out of it. Of course. A. B. अगर उनकी endorsement और उनकी बोतल या कोई उनका साबुन या उनका फलाना शैम्पू नजर आ रहा है कहीं पे, तो इसका मतलब है कि उस आर्टिस्ट की वजह से वो शैम्पू या बोतल या फलाना साबुन जो है वो नजर आ रहा है. Yeah. So you should definitely, if it's a song, should give them the rights of their songs. Of their songs, their music. And artists should also be aware that they should be asking for these rights before signing contracts. Of course. Absolutely. Contract sign किया करें, manager रखें जो आपके लिए काम करे. नहीं afford कर सकते तो खुद डील करें. That's all right. There's no harm in it. इसमें कोई शर्म नहीं. सब शुरू में करते हैं, right? Of course. Absolutely. Coming back to television, coming full circle back to TV and acting. So when are we seeing you on the big screen? सुना आप फिल्म साइन करने वाले हैं? Well, अभी तो नहीं की साइन, अभी नहीं की, लेकिन ये ऐसे मैंने फेंक किया. हाँ, अभी तो नहीं की साइन, अभी तो बस वेल लेफ्ट कर दूं. तो अभी नहीं की साइन, लेकिन हाँ स्क्रिप्ट्स जो हैं they're on the way. कुछ लोग पिच कर रहे हैं. लेकिन देखना यही है कि किस तरह की फिल्म जो है वो करनी चाहिए. किस तरह की फिल्म आप करना चाहेंगे? I think again plot पे डिपेंड करता है. I don't mind doing a serious film. I don't mind doing a love triangle. It depends how it's like conceived. What do you think would be your strong point? Angry young man. Angry young man. Action thriller type? Action thriller, yes. Horror? No horror. Action thriller. Action thriller. Yes. Suspense thriller type. Yeah. Yes. And I don't want to play a musician. You don't want to play a musician, right? You don't want to be typecast, right? Yeah, you've played a musician for 17 years.
Incidentally, Jal and Farhan is doing really well as a romantic hero. Correct. And उसका ड्रामा भी आजकल चल रहा है उनका और he's like now being referred to as the king of romance. Fabulous. What would Atif Aslam be? The angry young man. Why not? Why not? Why not? He's too hard to get. Too hard to get. That sounds like a good film. We hope we'll see you soon. And we hope we will continue hearing music because we love your music. And now we love you as a TV actor as well. I'm so glad. Thank you. And hopefully films as well. I mean, Sangama was an eye-opener. For sure. For sure. Thank you. Yeah. And Atif, thank you so much for your time. Thank you. Thank you for having me. Thank you. And this was long due, I know. It was long due, but I'm glad delightful. it happened. Yeah. Absolutely. Thank you. Thank you, guys.